Good evening, everyone. Welcome to another episode of Football Today. It's me, Shubham, and I'm joined by Opuru. Well, we'll be discussing the couple of matches which happened in this weekend at La Liga between Real Madrid and Almeria and Real Betis and Barcelona. Well, both of the results were in favor of Real Madrid and Barcelona, but oh my god, the Real Madrid match was a stunner in every sense. And I'm joined by a Real Madrid supporter just beside me. Well, bro, it's up to you now. How are you feeling after the victory? यार पहले तो गुड इवनिंग टू आवर व्यूअर्स जो भी ये प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं अभी। एंड हाँ, कैसा फील कर रहा हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लाइक एक्सप्रेस माई सेल्फ, बिकॉज ऐसा लगा कि हम बहुत बड़ा कुछ लाइक टूर्नामेंट जीत के आए हैं अभी। द लास्ट मैच कार्वाल लाइक ओपन दिस शर्ट आफ्टर विनिंग और स्कोरिंग द फाइनल गोल, इज लुकिंग लाइक वी हैव वन द यूसीएल और वन द ला लीगा, ऐसा कुछ लग रहा था। सिनारियो कुछ ऐसा ही हो गया था, but it was just a normal La Liga match which was being playing against Almeria, who haven't yet won a single match in La Liga. So this was like almost like a must-win match for Madrid. Like if you are competing for a La Liga position, which is the top of the table, if you are winning, just targeting to win the La Liga, you have to win this sort of matches. And Madrid were losing at home in the first half. It was 2-0. एंड तभी मैंने तुझे बोला कि ये हमको करना चाहिए था आज। वी शुड हैव डन द वॉच Bilkul. अलोंग We बिकॉज़ missed the watch अल्मीरिया along. में I mean, that watch along would be a वुड हैव cracker, बीन लाइक right? क्रेज़ी, वुड हैव बीन क्रेज़ी एज़ हेल दैट वॉच अलोंग। पर खैर छोड़ो, क्या ही कर सकते, हमारी किस्मत में वो था नहीं। पर वी गॉट टू सी द मैच एंड इट वाज़ सुपर, मतलब एंटरटेनमेंट तो फुल ऑन था। एंड हमारे विनी भाई का जो गोल हुआ, वो तो अभी पता नहीं कि यार जो हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, आई वांट देम टू लाइक confirm to us whether that was a goal or that was a hand of, मतलब क्या ही था वो, what was that, मतलब तू ही बोल यार। आई डोंट नो, मुझे सच्ची में मुझे नहीं पता कि दैट वाज अ डिसअलाउड गोल, ये गोल होना चाहिए था कि नहीं। प्लीज इज अप टू यू, मुझे नहीं पता। देखो भाई, पहले तो the goal which Vinny scored, it was not deliberate, it was coincident. Firstly, हाँ okay. हाँ, ठीक है, मतलब उधर हेड वेट जाके कुछ कुछ मतलब कहीं से कुछ यहाँ पे लग के घुस गया। ठीक है, well, we have seen such similar goals before also. Yesterday also I told you, like, for Man City, as far as I can remember, during the Mancini era of Man City, okay, Balotelli did the same बॉल thing थी। with his shoulder, just in front of the goal. The ball just lofted up and it was coming down. There was no goalkeeper, so just he's a show off, right? We all know that. So just to show as a show off, he did this just to push the ball into the net. इनटू द Okay, नेट, so we राइट। have seen this particular thing happen in football, like, previously. So I mean, usually the handball first and foremost, it needs to be deliberate. Secondly, it should be, I mean, as far as the rules are concerned, as far as I know, it should be below the muscle, that is arm muscle here. It should be below here, right? If it is, obviously, if it is deliberately, he's touching the ball here. I mean, in the biceps, right, or in the biceps. So obviously, it will be a handball. But if it is not deliberate, then obviously we saw in previous occasions also, the referee will not give it a handball if it's not deliberate, except for in the box, right? In the box, deliberate, non-deliberate doesn't make इट any डजंट sense. मैटर लाइक दैट। हाँ, Doesn't matter exactly. So I mean, yeah, it was coincidental. It was great. It was a great match. I mean, it would have been great if we did the watch along of it, but unfortunately, we had some work, personal work, both of us, so that's why we couldn't do so. But obviously, I mean, that could have been a cracker watch along. I mean, both of our reaction would have been like awesome. ठीक है? वी कुड हैव जस्ट ब्लास्टेड अलोंग द स्क्रीन्स एंड ऑल। मतलब Exactly. ये मतलब जब विंटर टू गोल विंटर जो क्या हुआ, है? विंटर टू विंटर क्या है? कुछ मायने नहीं कुछ है रखता, ही पूरा नहीं। घाट खुल के उड़ाते गार्ड पूरा। मार के ऐसा घुमाते हैं हवा में, ऐसा लग रहा है कि यूसीएल जीत गया है, ला लिगा जीत गया है। हराया बिल्कुल। किसको? अल्मीरिया को। चलो यार, क्रिकेट अल्मीरिया को तो हरा के हम देखो ऐसा भाई, कर रहे ये हैं। तो मतलब अभी जो टेबल सिचुएशन है, ठीक है, जीरोना अभी शी आई मीन जीरोना इज सिटिंग ऑन 52 points and Real Madrid are sitting on 51 points with a game in hand, right? So obviously, I राइट, mean, these matches against the teams who are in दीज the आर ऑल second half of टीम्स, the table are must wins, right? एग्जैक्टली, So I mean, स्पेशली अगेंस्ट समवन हू हैजंट yet won a match, they haven't yet won a exactly. single match, so it would have Moreover, been it a was in Bernabeu. bastard of the season. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. And moreover, it was in Bernabeu. So obviously there is a Exactly, desperation.
Like, first of all, this team hasn't won, and the first win of this season would be at Bernabeu against Real Madrid. So, I mean, that is something, I mean, which would be very hard to digest, not only for the fans, but also for the players, right? सातवें आसमान में होते अल्मेरिया के प्लेयर्स वुड हैव बीन इन द सेवेंथ हेवन आई गेस मतलब बिल्कुल क्या ही यार मतलब हाँ फर्स्ट हाफ तो पूरा ही डोमिनेट किया यार सेकंड गोल जो अल्मेरिया ने स्कोर किया था वो दैट वाज अ that स्क्रीमर was आई मस्ट से very good. दैट वाज That was एक्चुअली अ very good. स्क्रीम माय गॉड व्हाट अ स्ट्राइक दैट वाज बिल्कुल. एंटायर मैच मतलब बेलिंगम का पेनल्टी उसका जो बाइसाइकिल एफोर्ट था दैट वाज आल्सो लाइक सुपर्ब दैट वुड हैव गॉन इन आई डोंट नो माय गॉड I mean, if बार्नेबाउ वुड that हैव would जस्ट have gone in, इरप्टेड पूरा अगर पूरा दैट वुड मतलब हैव इरप्ट गॉन कर इन जाता Bernabeu. that would have that would have made sure the Bernabeu erupt. I'm quite sure about that. And फिलहाल यही यही है कि रियल मैड्रिड ने लास्ट मोमेंट में फिर से एक स्नैच कर लिया विक्ट्री. So they are like sitting in a not comfortable but yeah top ही है अभी तो सेकंड में है क्योंकि मैच शॉर्ट है. And Lagili and talking about the second match of La Liga like Barca and Betis that was like a more or less decent match. वो पहले हाफ में Barcelona was leading against Betis. फिर Barcelona scored again and Betis came back and he scored an ex Real Madrid player did score twice to bring back Real Betis into the game. But eventually Barcelona steal the game again, and that was in typical Madrid fashion. I must say, it's not that it's like preempted, but Madrid fashion में steal किया क्योंकि दोनों goals जो आए winning तो दोनों goals they have scored after 90. बिल्कुल. So this was great. वो भी वहां पे बार्सिलोना फैंस के मतलब लिए मुझे मतलब हंसी कुछ आ रहा है अलग ही कि जिसको का मतलब बात जो तू बोला ना अभी हाँ वो सोच के मुझे हंसी आ रहा है कि मतलब एक रियल मैड्रिड स्कोरिंग अगेंस्ट बार्सिलोना इन क्रंच मैचेस लाइक दिस इज लाइक द डेस्टिनी राइट. एग्जैक्टली हाँ और वहां पे तू सोच गिरोना 1-5-1 अगेंस्ट सेविल में सोच रहा था कि यार बिल्कुल. चलो रेमोस है एक गिरोना को रोक देगा राइट, राइट. 5-1 स्कोर लाइन माय गॉड And that too within I guess 20 or 25 minutes. I mean, there was a hat trick hero, right? I don't सो exactly remember the name, but there was a hat trick. माय गॉड सो मतलब लालिगा में मतलब कल इट वाज अ ब्लॉकबस्टर लालिगा डे आई मस्ट से जो नॉर्मली हमको प्रीमियर लीग में देखने को मिलता है वो लालिगा में Exactly. देखने को मिल गया. And La Liga is very interesting. Girona is giving a huge fight to Barca and Real, both of them. भी देखते हैं विनिंग अल्टीमेटली ये ट्रॉफी किसके हाथ में जाता है. एंड फ्लाइंग फ्रॉम स्पेन टू जर्मनी वहां पे तो ब्लंडर ही हुए जा रहा है. बिल्कुल. बायर्न हैव लॉस्ट टू वेडर ब्रेमेन. दिस वाज अ मतलब क्या ही मैं बोलूं अभी यार बायर्न वेडर ब्रेमेन के साथ यार लूजिंग अ मैच दैट टू इन अलियांज एरिना आई गेस दैट वाज अ होम मैच एंड इट Exactly. इज लाइक मेकिंग द जॉब इजी फॉर आई गेस जावी अलोंसो. वो बंदा Obviously. तो कमाल की कोचिंग कर रहा है लेवरकुसन जीरो लॉसेस टिल नाउ इन दिस एंटायर कैंपेन दैट इज ऑलरेडी ह्यूज बिल्कुल. and they are sitting at the top of Bayern मतलब Bundesliga with a 4 point gap with like not 4 point अभी तो नहीं है फिलहाल अभी अभी तो 7 point दिखा रहा है पर Bayern like has a game short so if Bayern बिल्कुल. win that तो that will be like a 4 point gap. तो तुझे क्या लगता है कि मतलब ये फाइनली ऐसा कुछ होने वाला है कि बुंडेसलीगा में हमको दिखने we are going to see a new champion. Well, we should we should. I mean, all the Bayern fans except I mean all over Germany, except for Bayern fans, everyone is like wanting this Bayern reign to end ASAP, right? I mean, the previous season Dortmund was on the verge of winning the league, but obviously they bottled it on the last day in the last minute. They just had to score जीत a में था goal. ऐसे छोड़ दिया उन लोगों ने यार. Score दिया. Just had to score a goal in their home ground, and they couldn't do so. So obviously, no one has to be blamed here. They themselves are to be blamed. But obviously, it was the previous Exactly. season. We don't want to, make a nuisance about it this season. But Exactly, हाँ. I mean, in this season, obviously, Leverkusen is in the driving seat right now. And I mean, I really want Leverkusen to win also because the contributions of Granit Xhaka has been awesome. He's an ex-Arsenal midfielder. I mean, he was from the Arsene Wenger era. So obviously, like I'm very proud of him because in the last season also he was at the top of the league in EPL. This season also he's in the top of the league in Germany. So I mean, I really want him to win this trophy. And for other Germany fans, apart from Bayern, I also want Leverkusen to win. So I mean, हाँ yeah, यार it ये was a great day yesterday for Werder Bremen and as well as for Leverkusen.
Well, हाँ, we are उनको at that. एडवांटेज मिल गया। बिल्कुल, 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 बिल्कुल. उनको एडवांटेज मिल गया कहाँ से, मतलब पता नहीं, वेडर ब्रेमेन उनको एडवांटेज दे रहा है। एंड हाँ, अगर नया चैंपियन होता है तो इट्स ग्रेट, मतलब यही सेम सेम चैंपियन, और लाइक बायर्न आर बीइंग क्राउन चैंपियन फॉर द लास्ट 11 इयर्स। हाँ चलो, वो डोमिनेटिंग है बुंडेसलीगा में, यार एक तो नया चैंपियन आना चाहिए, राइट? इन बिटवीन देयर शुड बी समवन हु इज विनिंग द टाइटल अदर देन बायर्न म्यूनिख। सो इस साल मुझे एग्ज़ैक्टली, लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, अभी भी नहीं पता। बुंडेसलीगा में बिल्कुल, हम तो देखते ही एंड में बायर्न कहाँ ना कहीं से मैनेज कर ही लेता है बिल्कुल. टू विन द लीग। तो अभी तक तो यही सिनारियो है। एग्ज़ैक्टली लाइक एंड आई आल्सो थिंक लाइक वेरी इंटरेस्टिंगली, अगर लेवरक्यूसेन ना, इस सीजन तो फिलहाल वो है नहीं, बट दिस हाँ, सीजन दे आर प्लेइंग सच नाइस फुटबॉल। आई जस्ट वांट देम टू सी लाइक इन अ hypothetical situation, if they were in the UCL this season, हुँ, I think that would have like created a huge blockbuster जिनके साथ भी उनका मैच लाइक होता, if they face big teams in the round of 16 or maybe the quarters or semis। चलो, ये तो मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूँ अभी, पर फिर भी if they compete against bigger teams like Madrid or Barca or even Arsenal, City पकड़ लो, लिवरपूल कोई भी पकड़ लो, I think they are in a place right now, Leverkusen, that they can compete with these teams, I guess। obviously, 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 exactly. I mean, they are यही the होता है only कि, team who are undefeated right now, right? In राइट, the, I mean, UEL also, they are the only team who are undefeated, and the same goes for the league. And yeah, kudos yes, to exactly, हाँ। obviously kudos to Javi Alonso for doing such an amazing work. And now we are in a world tour. We we started at Spain. We are now in Germany. Let's go to England. Okay, coming to England, we had a couple of blockbusters, high scoring games. First one being Arsenal and Crystal Palace, where Arsenal winning it convincingly with 5 goals. Yeah, 5 goals. And Liverpool again winning an away game at Bournemouth, a tough game. But in the second half, they just, I mean, they buried Bournemouth 4-0. I mean, after looking at the first half, right, I was a bit skeptical whether Liverpool would be able to, win the match. They would. I expected like Bournemouth to at least give a fight, but they didn't, and it's 4-0. Well, Gaurav, what do you feel about these two fixtures? हाँ यार, ये प्रीमियर लीग तो इंटरेस्टिंग होता ही है, मतलब ये दिस इज लाइक द स्टोरी ऑफ एवरी सीजन। प्रीमियर लीग Hmm. इज वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम द डे इट स्टार्ट्स। मतलब बहुत सारे टीम्स compete करते हैं, वी सी न्यू टीम्स कमिंग अप हु आर फाइटिंग फॉर अ फोर्थ पोजीशन। इस साल भी लाइक फोर्थ पोजीशन में तो बैटल चल ही रहा है। एंड ऑब्वियसली आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी एंड लिवरपूल, ऑल थ्री ऑफ देम आर बैटलिंग फॉर द प्रीमियर लीग टाइटल। Liverpool are in like a driver's seat right now, and Liverpool are playing super football despite of missing like their most important and anchor player Mo Salah, जो अभी है नहीं, Exactly. वो इंजर्ड भी हो चुका है अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस में जाके, and he's back to Liverpool for some rehabilitation, जिसके बारे में तो बात हो ही रहा था। Hmm. तो हाँ, अभी तो यही है लिवरपूल में। और आर्सेनल, इट वाज वेरी कन्विंसिंग फ्रॉम आर्सेनल। आई मीन यू विल बी लाइक अ बेटर जज ऑफ द सिचुएशन इन आर्सेनल, क्योंकि तो आर्सेनल को फॉलो करता है मुझसे भी ज्यादा। पर आर्सेनल दे प्लेड सुपरबली लास्ट डे, and it Obviously, was I very mean, convincing, and I it was would very love nice to to see see. Arsenal win such convincingly at their Right, home. right. This is a hell lot of confidence to the team, I guess, going forward in the season। Obviously, I mean, I would like to see further more involvement from Odegaard, obviously, but हाँ यार, form उस comes बंदे का up, एक comes गोल तो down. चाहिए, प्लीज हाँ, प्लीज नेक्स्ट डे ओडेगार्ड, प्लीज यार, उसको एक गोल मारना चाहिए यार, अभी बहुत दिन हो बिल्कुल, गया। यू नीड टू स्कोर मैन, कम ऑन। ही इज माय फेवरेट बिल्कुल. प्लेयर फ्रॉम आर्सेनल। ही इज Yeah. जस्ट लिटरली माय फेवरेट, मतलब वो बंदा कमाल Yeah, I का mean, है he यार। doesn't वो have any haters, right? He's a very cool person, and everyone loves him at Arsenal. Beat Arsenal, beat away from Arsenal, everyone loves him. I mean, yeah, I mean the current scenario at Arsenal, I wouldn't bank them at winning the, Premier League. I would still bank on Liverpool because पिछले बार बैंक कर दिया पूरा एकदम पूरा मेरे मुंह पे गोबर मतलब मारा हार्ट ने ठीक है गोबर फेंक के मारा पूरा एकदम मुंह में मेरा तो ऑब्वियसली आई एम नॉट बैंकिंग ऑन देम तो अभी तो मतलब लिवरपूल को ही मैं बैंक करूंगा ऑब्वियसली तो I mean, Liverpool should win it. Obviously, we have Man City. If talking not, like they. rant man, you're talking like rant man right now। Oh my. Oh my God।
तो मतलब हम्म, ऑब्वियसली मतलब मैन सिटी अगर एफएफपी चार्जेस में मतलब गिल्टी हो तो पता नहीं क्या होगा. But as far as the current scenario is concerned, I would bank on Liverpool to win it, and runners up, first runner up being CG, second runner up being Arsenal, and fourth in the table. It's confusing right now, and it can't be determined as of now. It could be Aston Villa, it could be Tottenham, it could be anyone, right? So yeah, I mean, after a world tour from starting from Spain to Germany to England, we are at the end of our episode right now. Well, we had quite a lot of discussions regarding the current, matches which just happened in the weekend, blockbusters at Germany, and some crackers at England, and obviously the Spain, the beautiful game at Real Madrid, winning it at the very last moment. And kudos to Jude Bellingham and Carvajal as well. Well, yeah, that's it from now. For now, it's me Shubham and Aparup. Well, we are bidding adieu. Goodbye, and thank you for watching. Please do like, share, and subscribe to our channel, and stay tuned for more content. Thank you. Peace out. thank